Welcome back to your maths class. So student, yesterday we have done few questions on टेलीमार्क, है ना. टेलीमार्क मैम ने समझाया और टेलीमार्क में हमें क्या समझ में आया. टेलीमार्क में हमने देखा हाउ वी कैन हैंडल अवर डेटा यूजिंग टेलीमार्क और टेबुलर फॉर्म या टेलीमार्क में हम कैसे अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. वो हमने किस में देखा, वो हमने देखा टेलीमार्क में. ओके, सो टुडे आल्सो वी विल डू फ्यू क्वेश्चंस ऑन टेलीमार्क. फाइन, एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस यू द पिक्टोग्राफ. ठीक है, देन आई विल इंट्रोड्यूस यू द पिक्टोग्राफ. फाइन, so first of all let us solve few questions on telemark, and before moving toward that let us try to understand the telemark. एक बार telemark समझ के देखते हैं, है ना. ओके, तो telemark में हम क्या करते हैं, with the help of bar and sticks what we do, with the help of bars or you can say lines, we with the help of bar and things what we do, we support, matlab we handle our data, we represent our data. Fine, so let us see what I mean to say here. So the only thing that I mean to say here is that in telemark mein what happen, see, to represent one I, two के लिए two lines, थ्री के लिए थ्री लाइन्स, फोर के लिए फोर लाइन्स एंड फाइव के लिए वन टू थ्री फोर एंड अ कट लाइक दिस. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स फाइव. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फाइव. ओके, नाउ सिक्स के लिए what we will do, 1 2 3 4 5 plus 5 and one standing line, that will be 6. Then 7, 1 2 3 4 5 1 2. 8 के लिए क्या होगा, 8 के लिए क्या होगा, 5 plus 3. 8 के लिए what we will write 5 and 3. 1 2 3 4 5 1 2 3. 9 के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4. and 10 के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. वाई, हमने क्या किया इधर 5 प्लस 5 को क्या किया, रिप्रेजेंट किया हमने, है ना. कैसे किया, 10 को रिप्रेजेंट 5 प्लस 5 से. चलो नोट इट डाउन, कम ऑन, नोट इट डाउन. ओके, completed. Now I'm going to erase. तो शेप बेस्ड एग्जांपल हमने कर लिया है. Now today we are going to do some other question. See, अच्छा देखो, हमने शेप बेस्ड क्वेश्चन किया था एंड सब्जेक्ट का क्वेश्चन किया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू फ्यू क्वेश्चन on some other topic. Let us see. So here are the variety of food item that kids like to eat. Okay, and then you have to represent that using not pictograph, telemark. Okay, now see. So I have to erase the heading to make the border or something like that.
Okay. Okay. So these are what? These are pizza pieces. Okay. These are what? Pizza pieces. Then these are sandwiches. Fine. Then chocolate bar. These are what? These are the chocolate bars. है ना, डेयरी मिल्क चॉकलेट ऐसी तरह होती है ना. Okay, these are the chocolate bars. Then what are these? These are ice cream with a cherry on the top. ठीक है. Few more chocolate bar. And few more ice creams. Okay. Now draw the diagram and make a tally mark. Come on. Draw the diagram, and what you have to do, you have to make the diagram and then you have to make the tally mark also. Come on. Completed? चलो करो. Okay. Now see, diagrams we have drawn. Now what we have to do, we have to represent this data in a tabular form. ठीक है? एक tabular form में we have to represent the data. Let us do. Okay. Now see. Let us make some lines first. Items. Okay. Then number. And after item and number, next is tally. Item हो गया, number हो गया, next क्या है? Next is tally. Come on. ठीक है, item the first item is what? Pizza pieces. So we write pizza only. Pizza. Next is what? Sandwich. Sandwich. After that, chocolate bars. Then ice cream. Okay, and then down here we will make column of total. Come on, make the column of total. अच्छा, अब काउंट करना है और फिर क्या करना है, सबको लिखना है आपको. पिज्जा कितने हैं, देन सैंडविच कितने हैं, चॉकलेट्स कितने हैं, आइसक्रीम कितने. कम ऑन, काउंट करके बताओ सारी चीजें कितनी कितनी है.
Okay. Pizza pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 क्या है? पिज्जा पीसेस कितने हैं? 8 है. Sandwich. Next is a sandwich. Okay, count the sandwiches. Where are the sandwiches? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sandwiches. Chocolate bar. Count the chocolate bar. How many chocolate bars are there? 1, 2, 3, 4, 5. 5 chocolate bar. Ice cream. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ice cream. Now let us represent this in the form of tally. अब क्या करेंगे? We will represent this in the form of tally. Tally के फॉर्म में we are going to represent it. Okay? तो पिज्जा कितने हैं? 8 हैं. टैली में 8 हम कैसे ड्रॉ करते हैं? 5 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 8. Next is what? Sandwich. Sandwich is 6. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 6. Chocolates are 5 in number. So 1, 2, 3, 4, 5. Ice cream are 6 in number. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now find out the total. Total कितने हैं? Find out the total. Find out the total. Completed? Okay. Now I want you to represent the tally. Now I want to represent the total in tally as well. So right here we are getting 25. Now how we will carry the 25? कैसे 25 ड्रॉ करेंगे टैली में? बताओ मुझे 25 कैसे टैली में ड्रॉ होगा? हाँ, wait, let me adjust the camera for you guys. Yeah. So 5, if we draw 5 times, we can represent the tally. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. है ना? तो क्या हो गया यहाँ पे? 25 क्या हो गया? रिप्रेजेंट हो गया टैली में भी. फाइन. नाउ डू दिस क्वेश्चन. कम ऑन, नोट इट डाउन फास्ट. Completed? Okay, so now I'm going to erase the board and we will do another question like this only. Fine. So ma'am is going to erase the board now.
Now, fine. So we have done one question, and now let us do another one. ठीक है? तो मैम is going to draw some figures or going to write, and you have to represent that. Fine. See. So what happened? So there is a jungle, and I am going to mention the numbers of animal in that jungle. Fine. What you have to do? You have to. I'm going to write the number of animal in that jungle, and you have to represent that data in the form of tally. ठीक है? Okay. Lion, tiger, elephant, lion, rabbit, tiger, elephant, fox, lion, elephant, rabbit, tiger, fox, monkey, lion, monkey. Okay. Now elephant, tiger, rabbit. Now represent this data in the form of tally. What you have to do? You have to represent that data in the form of tally. Come on, do the representation. Yes. क्या करेंगे? इन्हें एक सीक्वेंस में लिख के फिर आपने क्या करना है, इनका एक टैली मार्क ड्रॉ करना है. करिए. Come on. Completed? Okay. Let us do. Let us represent this data. First is animals. Next is number. The other one is tally. Come on, write down the animal's name. Yes, now write down the animal's name. Animals are lion, tiger, elephant, rabbit, fox. Is any animal left? Yeah, I guess monkey. Written? Lion, tiger, elephant, rabbit, fox, monkey. Now let us write how many. Wait. Yeah. How many lions are there? Count. 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4 elephants also. How cool. 4 elephant here. Rabbits. Count the number of rabbits. देखो कहीं ये भी तो 4 नहीं है, काउंट करो रैबिट्स को, काउंट करिए। rabbit 1, rabbit 2, rabbit 3. 3 rabbits. Okay. 3 rabbits. Fox. How many foxes are there? Lots of. 1, 2, 3, 4. Are 4 fox. 2, 3 and 4. Yes, 4 fox. Monkey. How many monkeys are there? Monkeys कितने हैं भाई? 1, 2. 2 monkey only. Yes, only 2 monkey. Okay. अब क्या हुआ? Let us count. Total find करो और tally. No, first find out the tally. अब क्या करेंगे? We will find out the tally. चलो tally बनाते हैं. चलो बनाओ tally. Yeah, make the tally. For lion. Tally में now lion are 4 in number. So 1, 2, 3, 4. They are also, tigers are also 4 in number. 1, 2, 3, 4. Elephant 4. Rabbit 3. Fox 4. And monkeys are 2 in number. Now find the total. अब क्या करेंगे? We will find the total. Find out the total. काउंट करो. काउंट करें कितना आया. 4 + 4 8 12. 12. ठीक है, कितना आया? 4 4 4 12 4 16 17 18 19 19 + 2 21. कितना आया? 21. नाउ 21 आ गया. अब इसको 21 को भी टैली में रिप्रेजेंट करना है. कैसे करेंगे? कैसे 20, जैसे पिछले क्वेश्चन में 25 को रिप्रेजेंट किया था, इस क्वेश्चन में वी विल रिप्रेजेंट 21. I this is what 5 10 15 20 and the last one is 21. तो हो गया ये रिप्रेजेंटेशन. अभी समझ में आया व्हाट इज टैली मार्क? वी हैव डन लॉट्स ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट ना. टैली मार्क पे बेस्ड हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे. ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं. ओके फाइन. सो नोट इट डाउन. देन आई विल गिव एग्जांपल ऑफ अनदर क्वेश्चन.
Okay. So ma'am is going to erase the board now. Fine. And next we are going to do a new thing. Let us see. I hope the concept of telemark is clear to you all. है ना? Telemark तो समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को. Now, अब ध्यान से देखो. अब हमने telemark तो कर लिया है. So the next thing that we have to do is pictograph. Next is what? Pictograph. What happens in pictograph? We represent our data with the help of pictures. What happened? In pictograph, we represent our data with the help of pictures. ठीक है? Now, class, tell me one thing. If I draw a face here, ठीक है? And suppose one face is equals to 3. ठीक है? One face is equals to 3. Then these 3 faces are equals to how much? Tell me. If one face represents 3, ठीक है? Then these 3 faces will represent how much? So what we will do? 3 plus 3 plus 3. What we will get? We'll get 9. Okay. Now next is, if one triangle represents 5, then 1, 2, 3, 4 triangle will represent how much? How we are going to do this question? If one triangle represents 5, then 4 triangle is going to represent 5 fours are 20. Or we can do it like this also, beta. 5 plus 5 plus 5 plus 5 is equals to 20. ठीक है? Completed? Okay. So kids, today we have finished our topic telemark. The next thing that we have to read is about the pictograph. And why ma'am has discussed these things, this I will tell you in the next class. ठीक है? ये पिक्चर्स कैसे, पिक्टोग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, इन सारे टॉपिक्स पे we will do the discussion in our next class. Okay? So this is it for today, and take care, goodbye, and ma'am will meet you in the next class. Okay? Bye bye.